हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? तो आज हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है लेंड्रो का A15, ठीक है गाइस, और ये MI का 16 वाट स्पीकर है। देख लो गाइस, कुछ ऐसा लगता है, फैब्रिक मटेरियल है, ठीक है। और ये हमारा ट्रिब्यूट एक्स साउंड को द OG। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, हमारा चैनल 1K से इतना सा करीब है गाइस, तो 1K कंप्लीट कर दीजिए, और 1K हो गया तो उसको छक्का मार दीजिए, बिल्कुल 10K कर दीजिए, ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये तीनों जो है 16 वाट के स्पीकर्स है, लेकिन इन दोनों में छोटे ड्राइवर्स लगे हैं। देखो, ये जो ड्राइवर्स बोलते हैं इनको ड्राइवर साइज बोलते हैं, जो कि स्पीकर का साइज होता है, ठीक है। दोनों में छोटे ड्राइवर्स लगे हैं, इसमें बड़े ड्राइवर्स लगे हैं, ठीक है। इसका बेस रेडिएटर इतना बड़ा सा पीछे लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों का फ्रंट में है यहाँ पे, और इसका भी सेम जगह पे। इसका कॉपी मांग लो, दोनों का सेम जगह पे। तो गाइस, मैंने क्या है कि इसका इसका फिर इसका टेस्ट नहीं कर रहा, मैं तीनों का एक साथ टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ अच्छे से ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको तो ऐसे ही यार मैंने हाथ में ले रखा है, ठीक है। देखो, पूरा वीडियो देखना, कंक्लूजन बार बिल्कुल भी मिस मत करना, और हेडफोन्स में वीडियो देखना, ताकि आपको स्पीकर की जो ओरिजिनल क्वालिटी का अंदाज़ा लगे। ये मैं बोलना भूल गया था, तो मैं बाद में रिकॉर्ड करके ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हाथ में ले रखा है स्पीकर को, वट तो कर लेना भाई, ठीक है। फिर पूछना कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन है, पूछ लेना, आराम से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइस, कुछ ऐसा रूम है मेरा, और वहाँ पे रखा हुआ है स्पीकर। अब उसको टेस्ट करेंगे, लेट्स गो। तो गाइस, MI की जो बैटरी है वो भी 40% पे ही है। बाकी ट्रिब्यूट की A15 की 60% और ट्रिब्यूट की पता नहीं कितनी है, ट्रिब्यूट की 60%। तो अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, एक गाना ख़त्म हो गया, अपन दूसरा गाना भी स्टार्ट करेंगे। बीच में ऐड आ गया था, कोई बात नहीं। तो अपन दूसरा गाना भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ना, तीनों का 70% है, तीनों का 70% है। और स्टार्टिंग में तुमको A15 ज़्यादा लाउड लगा, क्योंकि इसका 100% किया हुआ था, ठीक है। अब मैं तीनों को 50% पे टेस्ट करूँगा, तीनों को 50% पे, ठीक है। फिर दूसरे रूम में जाके तीनों का 100% पे टेस्ट करेंगे। फिर रूफ टॉप में जाके तीनों को 70 पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। रूफ टॉप में 100% नहीं कर सकते, घर वाले चिल्लाएंगे यार, तो समझा करो, ठीक है। रूम पे करेंगे, दूसरे वाले रूम पे, ठीक है। तो भाई, अभी हम करेंगे दूसरा साउंड टेस्ट, लेकिन 50% पे, ठीक है। लेट्स गो।
ओके गाइस, तो तीनों का वॉल्यूम मैंने 50% सेट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं साउंड टेस्ट। ठीक है, लेट्स गो। यहाँ पे देख लेना भाई किस किस का नाम है। A15 उसका है, लेंड्रो का है, ट्रिबेट वाला तो पता ही होगा, और MI वाला है। लेट्स गो। तीनों का वॉल्यूम 50% है गाइस, तीनों का। To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. तो गाइस ये हो गया सॉन्ग अपना ख़त्म। तो गाइस वापस मैंने इतने बड़े रूम में, ठीक है, इसको सेट कर दिया। देखो तीनों स्पीकर है। ये वाला अपना लेंड्रो का है, ये वाला MI का है, और ये वाला ट्रिबेट का है। मुझे पता है क्या लग रहा है, MI का जो है ना वो जवाब दे देगा, बिकॉज उसकी बैटरी 40% और मैं चला रहा हूँ फुल वॉल्यूम पे। ठीक है, तो जो होगा देखा जाएगा भाई। बैटरी लो पे थोड़ा सुन लेना। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें बाकी स्पीकर की तरह बेस वेस कुछ कम नहीं होता, बिल्कुल सेम रहता है। इसका एक फीचर अच्छा है MI का। ठीक है, तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, तीनों के तीनों फुल वॉल्यूम पे हैं। ठीक है, लेट्स गो।
वोकल्स पे ध्यान देना, वोकल्स। भाई मेरे को तो पर्सनली MI का ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, कसम से। बहुत बड़े हॉल की बात कर रहा हूँ मैं। चलो ना, मैं अभी दूसरा सॉन्ग प्ले करता हूँ। अभी तक इसने बैटरी लो नहीं बोला यार। लेट्स गो, दूसरा सॉन्ग प्ले करते हैं। चलो गाइस, आज फुल वॉल्यूम पे ना लो बेस टेस्ट हो जाता है भाई। MI स्पीकर में चल रहा है अभी। बताओ लो बेस किसका अच्छा है।
मॉर्निंग गाइस। तो ऊपर मैंने इसको रख दिया है रूफटॉप पे। देखो ये हमारा छत है, ठीक है। ये देखो पूरा ओपन एरिया। यहाँ पे देखो जो एमआई के जो राइट साइड वाला स्पीकर है वो ट्रिबेट एक्स साउंड को है, उसके बीच में एमआई का पोर्टेबल स्पीकर है, उसके लेफ्ट साइड में लैंड्रो का A15 है। कोई बात नहीं, एमआई का मैंने चार्ज नहीं किया था। तो भाई इतनी लंबी टेस्टिंग के बाद थक गया हूँ यार, उसके लिए 1 लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। और फाइनल कंक्लूजन के लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। इन दोनों का जो वजन है ना ठीक है, इन दोनों का जो मिला के वजन है ना, ट्रिबिट और लैंड्रो का, या फिर 2 ट्रिबिट ही मान लो, ठीक है भाई, इससे कम है। यार थोड़ा तेज गिरा दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं, इससे कम है भाई, इतना भारी है। मैं हंस रहा हूँ तब से भाई। इसको लेके गया था मैं ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे, और भाई इसको भी लेके गया था मैं ऐसे दूसरे हाथ में। मैं भाई क्या है भाई, इक्वल इक्वल लग रहा है मेरे को तो। चलो कोई नहीं यार, चलो टेस्टिंग पे आता है, ठीक है। देखो पहले इसका तो थोड़ा सा डिज़ाइन देख लेता हूँ मैं, ट्रिबिट और इसका। देखो बिल्कुल सेम सेम है भाई। ये देखो ये ट्रिबिट रखा है और ये अपना लैंड्रो का जो A15 है वो रखा है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा क्या है ऊपर, अरे क्या बोलते हैं इसको, फ्लैट फ्लैट टाइप का है, और ये थोड़ा राउंड राउंड टाइप का है। देखो जैसे होता है ना यूनी बॉडी टाइप का, ठीक है। तो दिखने में सेम होने से कुछ नहीं होता, पावरफुल तो यही है अपना ट्रिबिट एक्स साउंड इससे, ठीक है। चलो अब आते हैं ओवरऑल कंक्लूजन पे, ठीक है, लेट्स गो। और लाउडनेस की बात करें, ठीक है, लाउडनेस जो है सबसे ज़्यादा इसका लाउड लगेगा। तुमको लग रहा होगा फ़ोन में कि भाई इसकी ट्रिबिट एक्स साउंड की वॉइस ज़्यादा आ रही है तो ये लाउड होगा, ना भाई ना। रियल लाइफ में ये ज़्यादा लाउड फील होगा, क्योंकि इसका लाउडनेस है ना बेस के साथ मिल के आता है, ठीक है। तुमको पता ही होगा, तुमने देख ही मतलब सुन ही लिया होगा, हेडफोन्स यूज़ करो भाई, मेरे वीडियो देखते हो हेडफोन्स यूज़ क्या करो, ठीक है। तो इसका जो लाउडनेस है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ट्रिबिट, उसके बाद A15, ठीक है। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 20% वॉल्यूम पे, 20-30% वॉल्यूम पे सबसे बढ़िया जो साउंड करता है ना, ठीक है भाई, कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। 20-30% जो वॉल्यूम है ना, अंडर 50%, उसमें सबसे बढ़िया है ट्रिबिट, ठीक है। अंडर 50% वॉल्यूम में गाने सुनना है, ट्रिबिट लो, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। 50% से ऊपर वॉल्यूम है ना, तो ये वाला ले सकते हो, ठीक है। 50% से ऊपर बढ़िया आपको खतरनाक साउंड मिल जाएगा ट्रिबिट को बीट करने वाला, ठीक है। तो 50% से ऊपर वॉल्यूम में आपको चलाना है, लाउड म्यूजिक पसंद है तो ये आराम से ले लेना, ठीक है। ये मत ही लो भाई देख लीजिएगा भाई क्या सीन है इसका, ठीक है।
तो अब मैं इसको किसको रिकमेंड करूँ भाई। साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत है यार लाउडनेस में, बेस में, वो है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है भाई, ये एक ऑप्शन बन सकता है। अगर 2000 के नीचे है तो मैं बोलूँगा यार ले सकते हो, एक अच्छी क्वालिटी का स्पीकर चाहिए तो ले सकते हो, ठीक है। लो साउंड के लिए ये बढ़िया है, ठीक है, और हाई साउंड के लिए ये बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि ये लो साउंड के लिए बढ़िया नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन इसके मुकाबले में ये बढ़िया है, ठीक है। उल्टा बोल दिया, इसके मुकाबले में ये बढ़िया लो साउंड में, ठीक है। वही हाई साउंड में ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, ये अच्छा है, लेकिन इसके मुकाबले में ये बेकार है थोड़ा सा, ठीक है। तो लो साउंड के लिए चाहिए, हाई साउंड के लिए चाहिए, इसको भूल जाओ। और हाँ, बैटरी लाइफ की बात करते हैं। तुम लोग कितना बोलते हो भाई एमआई की बैटरी लाइफ ये खराब है, वो खराब है। भाई 40% पे 10% कम हुआ है, फुल वॉल्यूम पे टेस्ट किया मैंने, ठीक है। अब देखो भाई, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, इसकी बैटरी कंपनी क्लेम करती है 24 घंटे, इसकी बैटरी भी कंपनी क्लेम करती है 24 घंटे। इसकी बैटरी इसकी बैटरी कंपनी क्लेम करती है 12 घंटे के आसपास, ठीक है, 12-13 घंटे के आसपास। अब मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, देखो ये तो 2 दिन ही हुए मेरे पास आए हुए, ठीक है। तो इसका मेरे को जितना आइडिया मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो, जो बैटरी लाइफ होती है ना, जो कंपनी क्लेम करती है, वो 50-60% वॉल्यूम में क्लेम करती है, कोई 100% वॉल्यूम में क्लेम नहीं करता। ये तुमको बता रहा हूँ, कंपनी जो क्लेम करती है वो 50-60 वॉल्यूम पे सारी बैटरी लाइफ क्लेम करती है। वैसे अगर इसका भी देखें ना 50-60% वॉल्यूम पे इसका भी 24 घंटे आराम से चल जाएगा। ये लेंड्रो का जो है ना, आराम से इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी सही है, ठीक है। 24 घंटे तो नहीं चलेगा, मतलब ठीक है यार, 20 घंटे के आसपास दे देगा बैटरी लाइफ। इसका 24 घंटे ही मिलता है, मैंने टेस्ट किया, इसका 24 घंटे ही मिल रहा है, वही 50-60 वॉल्यूम पे, ठीक है। उससे भी ज़्यादा मिलता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन मिलता है। मैंने इसको आराम से टेस्ट किया, बहुत पुराना स्पीकर है मेरा ये, ठीक है, जनवरी में लिया था मैंने। और इसका भी मान के चलो, मेरा भाई रोज क्लास करता है, ठीक है, 40 से 50% वॉल्यूम पे, तो तब भी बैटरी लाइफ 40 पे जाके रुकती है। तो इसका भी मान लो 6-7 घंटे का बैकअप दे देता है, ठीक है, आराम से दे देता है। तो कंपनी कहीं ना कहीं सच बोलती है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, इसको ओवर एस्टिमेटेड कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अगर मैं फुल वॉल्यूम की बात करूँ, फुल वॉल्यूम पे ये 10 घंटे चल जाती है आराम से। इसका तो फुल वॉल्यूम रखना ही पड़ेगा आपको, तो इसका भी वही 8 घंटे के आसपास दे देती है बैटरी लाइफ, 8 घंटे या फिर 7-8 घंटे के आसपास, थोड़ा सा कम रहता है इसका, ठीक है। लेकिन इसका जो है, इसका मैंने फुल वॉल्यूम पर टेस्ट किया गाड़ी पे, भाई 2 घंटे सता नहीं चलता भाई, 1.5 से 2 घंटा, वो भी मैक्सिमम 2 घंटे, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। एक काम कर सकते हो, अभी तो ले लो एमआई का स्पीकर, फ्यूचर में एक सिंगल सेल बैटरी आती है 4000 रुपये का, वो रिप्लेस कर देना भाई अपने आप, या फिर किसी टेक्नीशियन के पास जाकर बोलना यार अच्छा बैटरी लगा दो, वो लगा देंगे, थोड़ा सा पैसे लेंगे, लगवा देंगे। क्योंकि साउंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको एमआई से, ये बात तो सही मिलेगी आपको, ठीक है। बैटरी है जो भी है, ठीक है। तो विनर कौन है इन दिनों में से? ऑफ कोर्स एमआई वाला विनर है। बैटरी सेक्शन में मैं ट्रिबिट को विनर मानता हूँ, सेकंड पे ये मानता हूँ, थर्ड पे एमआई को देखता हूँ, लेकिन बाकी ओवरऑल जो विनर है वो एमआई का है, हर सिनेरियो पे अच्छा काम करता है। सेकंड ट्रिबिट है, थर्ड ऑफ कोर्स A15 है। भाई हमारा चैनल इतना सा करीब है 1K से, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।